Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today again I'm here with ask you. So let's check statement first. So the statement is, some people think that media nowadays have influenced people's lives in the negative ways. कुछ लोगों का मनना है कि आजकल मीडिया की गल की जाए तो वो नेगेटिव तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ. To what extent do you agree or disagree? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? Got it? So whenever we are talking about to what extent, so what you have to do, you have to write there I do partially agree. So partially meaning is, I would say, along with the positive, right? So the media also have some negatives. So positives ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ media ਦੇ ਕੁਝ negatives ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, right? So you have to write both positives as well as negatives. Got it? Starting ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ introduction part ਦੀ? So you will start with, it is argued that, meaning is there are arguments किदे बारे, whether and, yes you will write there or, whether or statement बनाऊंगी. So whether the media plays an instrumental role in people's lives, or it casts an adverse effect on them. Yes, so that will be all about rephrasing. How you will do it? By using whether or. So whether तो बाद लिखिया कि ये अहम रोल प्ले करता मीन्स ये पॉजिटिव्स ने, या फिर खास एंड एडवर्स इफेक्ट मीन्स ये नेगेटिव्स ने किना ते लोकां ते. Got it? Then you have to give your opinion. So to what extent means you will write there I do partially agree with the given school of thought. Got it? So what you have to do in body paragraph 1, you will write about the positives of media, and in 2 you will write about the negatives. Got it? So let's start discussion with the positives as well as negatives. हाँ जी, so सब तो पहला आप start करते हैं बेटा जी positives. तो how many you have to write here? 2 positives and 2 negatives, because I have written here I do partially agree. Got it? That's why. So what are the positives of media? Number 1, I will start with, it is only about the media that we people have enough knowledge or enough information about the events which are being occurred in the whole world. It is only due to media that the global village, we are the part of the global village, small global village. We do not belong to the big planet Earth. So मैं ये कहना चाहनी हूँ कि सिर्फ मीडिया करके पॉसिबल है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Got it? So ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼. ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? person who is familiar with the whole world. ਉਹ person ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ. ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. Got it? So first one is, yes, it is only about the media or due to media, or I will start with thanks to media we are able to acquire instant information about all the events which are being happened or occurred in the whole world. Got it? So then आप लिखेंगे कि exactly instant information मिल रही है मीडिया के थ्रू सानू, right? So knowledge बढ़ रही है, we are able to broaden our horizon. Knowledge का दायरा बढ़ रहा है, and what we are becoming? We are becoming cosmopolitan personalities. Got it? So that is the first and foremost positive.
I hope it's clear. Now come to second positive. As we can also say, it is only media which shapes our opinions. Right? Second काम की कर दी मीडिया साडे opinions की shaping कर दिया. किद्दां कर दिया बेटा? So I would say कि एक link है government ते individuals दे विच. Right? So तुसी इत्थे लिख सकते हो कि as we have never met to any prime minister or president, ਅਸੀਂ कभी भी किसी ਨੂੰ नहीं मिले, but still whenever it is the time to cast votes, then we take decision depending on the media coverage of the candidates. So मैं ये कहना चाहनी हाँ कि ਜਿਹੜਾ मीडिया कितना कितने साढ़े ओपीनियंस ਨੂੰ शेप करता है, शेपिंग ਦਿੰਦਾ ਆ. जिदा कि आप कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, कभी भी किसी प्रेजिडेंट नहीं मिले, बट जो टाइम आता है वोट पाने का तो असी लाइक कि अकॉर्डिंग पाने जिदा मीडिया ने सानू शो किया होंगे वो अकॉर्डिंग साढ़े ओपीनियंस की शेपिंग होंगी है, वो अकॉर्डिंग असी अपनी वोट कास्ट करते हैं. इज इट क्लीयर? सो दैट इज द बेनिफिट. और पॉजिटिव, सेकेंड पॉजिटिव इज मीडिया shapes our opinions as it is a link between the government and individuals. We have never met you any prime minister or president when it is the time to cast our vote. We take decisions depends on, yes, the media coverage of the candidates. Yes. So that is all about the second positive. You have to write only the two positives here. और भी positives आप discuss कर लेने हैं. Third one you can write about it's only due to media that a common man is able to get justice. Justice की गल की जाए तो कितना कितने मीडिया का बहुत अहम रोल है common person ਨੂੰ justice provide ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. Then you can cite an example of Jessica's murder case. You all know she was a model in Delhi actually on 30th April 1999. ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ that is by Manu Sharma ਜਿਹੜਾ ਕਿ politician ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उस टाइम पर जो फाइल सी क्लोज कर दिता गया सीगा बट वो रीओपन करवाई गई सी. इट वाज ओनली अबाउट द मीडिया कि फाइल रीओपन हुई एंड बाय 2008 उन्हें पनिशमेंट मिली सी. गॉट इट. सो अदरवाइज वी कैन से कि जो जैसिका के पेरेंट्स ने वो कदे भी जस्टिस ना पाते अगर मीडिया उन्होंने हेल्प ना करती. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव कि जो कॉमन पर्सन है, कॉमन मैन है तो कितना किते उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करने में मीडिया का बहुत अहम रोल है. Number 4 also here is one more point to write here, that is you can say media is also helpful in order to just disseminate our culture and lifestyle. साडा कल्चर लाइफस्टाइल डिसैमिनेट करने के लिए, डिसैमिनेट मीन्स स्प्रेड करना पॉजिटिवली, तो कितना कितने मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है उस राइट. सो तुम लिख सकते हो कि बहुत सारे इदां दे प्रोग्राम्स ने जिथे कि एक नॉर्मल पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज गॉट टैलेंट थ्रू विच जो साडा कल्चर इंडियन कल्चर है दैट इज गोइंग टू बी डिसैमिनेटेड राइट. अलॉन्ग विद दैट यू कैन से डिसैमिनेट भी हो रहा है एंड मोर ओवर जो कॉमन पर्सन है कितना किते एक्वायरिंग नेम एंड फेम यू कैन से राइट थ्रू दीज प्रोग्राम्स जो कि टेलीकास्ट किए जाते हैं मीडिया दे थ्रू. गॉट इट. सो here 4 points we have, that is all about the positives of media. Now come to its negatives. Number 1, we will talk about, as nowadays most of the people remain glued to the technological gadgets in order to surf net or internet to just use social media.
सोशल मीडिया ਨੂੰ यूज करने लोग चिपके रहते हैं, they remain glued to, they remain hooked to the technological gadgets, as we all know, right? So that's why most of their time or long time ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ consequently they don't have enough time to spend with their own family members because you know ਉਹ involve ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, indulge ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ virtual relationships ਦੇ ਵਿੱਚ. So result ਕੀ ਹੈ? negative. As a result or as a consequence, actual relationships has taken a back seat. Got it? So that is all about the first negative which we can write here. So you can write, in this present scenario means nowadays most of the people remain glued to technological gadgets in order to surf internet, to use social media applications. Got it? So what does it mean? So chipke रहने means they do not have enough time to spend with their own family members. उन्होंने कोई time नहीं है spend करना अपने family members के नाल. You have to write there, okay? So result will be, I'm going to write here result, that is as a consequence actual relationships has taken a back seat. So that is the negative result or negative of using media. Got it? क्योंकि ज़्यादा लोग ਇਹਦੇ ਨਾਲ चिपकन लग गए, ज़्यादा लोग ਇਹਦੇ ਨਾਲ glued रहते हैं, hugged रहते हैं, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ अपनी फैमिली ਨਾਲ टाइम स्पेंड नहीं करते. एंड नेगेटिव इज कि उन्होंने जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स ने बैक सीट ला रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वर्चुअल रिलेशनशिप्स उन्होंने वध रही हैं. गॉट इट? नाउ कम टू सेकंड वन. So second is all about, particularly I'm going to talk about children here. So as we know, violence and vulgarity is being shown on the media, on televisions, you can say on internet, right? So चीज़ें show कितनी जाने हैं. Moreover, whenever children are exposed to such inappropriate contents, जो बच्चे ने वो inappropriate contents ने जो vulgarity ना related, violence ना related जो बच्चे देख रहे हैं, then they go astray from their path. अपने रास्ते तो भटक जाते नहीं. So I would say that is only due to the violence. So that's why bullying problem is becoming more and more prevalent nowadays among children in the whole world. So main negative is जेडे बच्चे ने उन्हें bullying problem बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? They like to imitate whatever they are going to see. So जो भी देख देने, जो भी watch कर देने टीवी पे, so उन्हें imitate कर देने, copy करना like कर देने. ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स ने राइट उन्होंने विच शो की जाती है वल्गैरिटी और वायलेंस. सो जिदा वेखते हैं कॉपी करते हैं. दैट्स वाई बुलिंग प्रॉब्लम हैज बिकम और इज बिकमिंग prevalent nowadays among children in the whole world. Got it? That is also negative. Especially we will talk about children as violence and vulgarity, yes, is shown on the television or other through other media, you can say, right? So ये चीज show कितनी जाती है. So that's why yes, whenever you can write there, whenever children are exposed to such inappropriate contents, जो इदा के जो inappropriate contents ने जो बच्चे इदा exposure करते हैं, yes, they go astray from their path because बच्चे ने जेडे as we know they are vulnerable, वो जल्दी की हो जाते हैं, अलेयर हो जाते हैं, so अपने रास्ते तो भटक जाते हैं. So main result I would say is bullying problem has become or is becoming very, you can say pervasive, very prevalent. Meaning is same.
भी बहुत ज्यादा कॉमन बन गया, परीक्षण लेते हैं, PREVALENT, that is the main negative. Got it? So 2 positives you need to write there along with 2 negatives. Okay, so I hope it is clear. Thank you, have a nice day, मिलते next time नवी वीडियो दे नाल, and don't forget to subscribe my channel, do like, share and comment. Bye bye.